Okay, so let's start. First of all, I welcome to all of you. I can see in this forum right now, there is Aarti, Aditi, Amba, Deepak, and Ravi, Mallikarjun, Neha, Saurabh, Sri Lakshmi, Sumant, Sumanta, Tushar, Vipin, Neha, and Nilesh. Okay, so I welcome to all of you. First of all, thank you so much for taking your time and joining this session. Well, my name is Nitesh, and with me, the training coordinator, Snehal, who is a Refer Me Group training head. She has coordinated for each and everything from start to end. About Refer Me Group, we are 8-year-old edutech institution, and presently we are having a professional network of 110,000 people across globe, majority from the India. Rather, I should say 90% are from the India. And in this 8 year, we have transformed more than 5,800 professionals into their career, whether if we talk about software testing, AWS, Agile, business analyst, Scrum Master, DevOps, right? Multiple training programs that we have run. In last 8 years, we have shared more than 6 lakhs jobs free of cost. Even in May month, we have shared 5,500 jobs, 5,500 jobs without any cost. So the idea is to help the people, and with this thought process, we are running this referral from last 8 years. All right. Now, the data nowadays, as we know that data is most important, and most of the jobs are coming into a sector like data analyst, data science. What are those things and how people are getting a good package in that? Even when we have started our business analyst course, at that time a lot of people have inquired that why don't you start your data science or data analytics course, because they have a more in demand, and people are easily getting placed for those things, right? So we thought, and then we started this program. So I welcome to Ravi sir, who is going to be a trainer for this forum, and he has more than 4 years of experience in teaching. I'm talking about. He has trained more than 100 plus professionals in uh, in data science, in data analytics, and majority of the students have been placed, right? So without taking a much time here, I invite Ravi sir to share the content. Now each one of you, I believe, anyone is here from software testing background? Yes. Yes. Tushar, Tushar, Sumant, Mallikarjun. So what mm, is the I, reason, guys? Yep. Why you want to switch from software testing to this field? we actually were working in manual testing from past 7 years as a lead analyst. So we're Mm-hmm. just looking for some change because like I'm not that much good in coding and all. So trying to explore some other opportunities. So Okay, that's the okay. reason. Yeah, I want to, Got it. Thank you so much, Tushar. Anyone else who is from testing background? Yeah, I'm from Sumandas from the side. I have experience in embedded testing in 2.5 years of experience in embedded domain. So I think I have experience like a Python. So that's why I chose the data analytics. Like it will be helpful for me, like Python and SQL. Absolutely. Absolutely, Sumant. Thank you so much. Mallikarjun, you were sharing something. Yes, yeah, I am looking for a change for this manual to automation and data related things. So Okay. Go I ahead, will please. next planning to data science. That's what Okay. I chose this opportunity. Okay, Yeah, okay, got it. Thank you so much, Mallikarjun. So yeah. Thank you. only the male people are here. Rest female are just here to join the demo and see how it is going, right? Aditi, Amba, and Neha, you, Aarti, you girls are will not speak anything. Why you have joined this demo? What is the purpose? I mean, you girls can also speak, right? I mean, see, in any demo, for us, it is a demo, right? We are meeting for the first time. And believe me, in my 18 years of experience, right, I have found that people come for the demo, they do some kind of R&D, they go. So it is your choice whether you want to make it as a constructive or destructive. Constructive that you participate, ask your question, because you will find the professionals on LinkedIn very easily. But how many professionals are going to help you?
That is most important question. Either you go in their community, initially they will not accept you because you do not have from that kind of a background or skill set. So you are sometimes hesitate that what question I should ask, and sometimes people don't entertain, right? So either you can make it as a constructive, you ask the question, share your thought, why you want to do this, what kind of a future scope, what kind of jobs are there, what is the salary package, how easy for you to switch yourself from another background to data field, or as a fresher, how you can make your career, or you can make this demo as a destructive, just join, listen, go back to close the demo and do your work, right? And then wonder why other people are getting a good package and I'm not, right? So option is yours, to be very honest, right? For me, it is like another demo. It is like people whom I'm interacting. For you, whether it is a constructive or destructive, your choice, right? So yes, any question, what is the reason, what you are looking from this demo? I Any want to change my career. That's why actually I'm working in US mortgage domain. So Mhm. right now I want to become a data analyst. So like that, I want to know what is in data analyst, what is it going, which tools are using. So I Mhm. want to Mhm. learn. So that purpose I joined this demo class. Okay, okay. Thank you so much, Aarti. Thank you. I would like to speak. Amba here. Yeah, Amar. Yeah, thank you. So, yeah, sorry not to speak earlier because I was thinking it was just for testers. And yeah, about me, why I want to switch to data science. Actually, I'm not actually switching because I've already worked as a like data analyst in data analyst domain for Mhm. around years, and then I moved as a customer success analyst, which was more of a customer facing role, as well as working on backend for mobile configuration Mhm. and working on some SQL database stuff. Mhm. So after that, I'd been laid off, and past 6 8 months, I'm working as a data specialist freelancer. Mhm. So yeah, I am trying to transition as a business analyst as well as like what I have seen in that business analyst domain that people prefer more with like the job description is more of a data analyst along with the business analyst skill. So that is a little bit of confusing for me in the job market right now. But Mhm. Mhm. this company's demand is so we have to upskill according to that, right? Okay. So, Not Amar, let we can do one thing. I mean, this is specific to business analyst, so we can connect individual, and no worries. I will help you on that front. That how. I believe even like data analyst role is very much of an interest for me, and I believe that a data analyst is also like one of the skills which a BA should require. So I am also Mhm. intrigued. As well. That's why Okay, I'm joining. okay. So just one thing, Amba, because other people are also here, since you worked as a data analyst in previously, so you are from that background. Please, can you Yeah. help other participant here that what is the market scope and what is the job, what kind of jobs are there? Are they available and the people can get entry? I mean, what is the scope, salary package usually? Yes, I believe yes. Data analyst is very much in the market right now, and the jobs are also available. But the thing is, the demand and like supply gap is very much persistent Yeah, right now obviously, obviously, because because the jobs are available, but Mhm. people have to be upskilled to that level. I Absolutely. believe. Absolutely. It is not only Amba with the data analytics, but even software testing. I mean, since as I said, I have 18 years of experience, but still, when I take an interview, around 1,000 plus interviews I have taken in manual testing or in testing, I can say. But still, if I will count, so maximum 10 to 20 people I found really they are good into their skill. So it's not data analysts, but even any technology. The good resources are not available in the market. That is for sure. That Even is one reason is because of the education system, I believe, yeah, yeah, because absolutely. and also since I am from civil engineering background, which whom I transitioned into data analyst after joining.
The background doesn't matter a lot, because in Refer Me Group we have seen the people have changed from non-IT to IT background. People have changed from non-IT 2 lakh package to 28 lakh package, that we have seen, right, in a various courses. We Yes. have seen people who have changed from no knowledge of a coding to automation expert, right? We have seen people from um, publishing domain or manufacturing domain to a Scrum Master. So we have a lot of stories that we have seen in Refer Me Group. Only the thing is the intention should be there. One, second, with which kind of a mentor they are associating, that is most important, right? I mean, let me Yes. show you something very interesting here. I don't know this is relevant to here or not, right? As I say that we have a multiple, you know, uh, forum where people are associated with us. This kind of a polling we have done approximately 6 or 7 months before. So for a manual testing we have done, right? And 73 people have participated from our fresher group, right? And 63 people have said that manual testing training institutions are taking money and there is no placement. And the same thing is happening with other technology as well. So it is very important that which mentor you are associating and how you are grooming yourself. Most of the time people, even our previous batches with the BA or automation, people have done the course and they came back to us, please help us to do the course, right? They have done the course with us and before completing the course they got placement, they got placed. That is the reason in last the training program 5800 professionals, if I talk about, we have 80% plus placement because the way we teach is right. And that is the reason on Google, if you will go and find out about Refer Me Group, we have 600 plus rating. 600 plus professionals have rated us by 4.8. So anyways, I'm not going to take much time here. I just invite Ravi sir, but thank you so much, Amba, for your sharing. This will help to other people as well. uh, I invite Ravi sir. Yeah, Amba, you have something to share because you have unmuted. No, no. Thank you so much. Okay, I don't thank have. you so much. So I invite to Ravi sir for to continue the session further and help you. And I request to each one of you, ask as many questions as you have. Like, can I transform? I have 4 years, 6 years, 10 years of experience into software testing. Can I move myself into data analytics? If yes, then what will happen to my previous experience? How I can justify? One question. Second question, what kind of a job scope is there in the market? Third question, what kind of a salary package is there? Fourth question, in which location most of the jobs are coming? Another question, what is the future scope if I move myself as a data analytics, then what is the future scope is there? Which next question, which kind of companies are hiring for that? Another question, although it is a myth to, if I say, is there any security in IT world or not? But yes, what kind of a job security is there? So ask such questions from Ravi sir because he is expert, right? He can help you to understand those concepts. So Ravi sir, over to you. Hello everyone. हेलो. Yes, sir, you are audible. ठीक है. हाँ जी. जैसे नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड. इफ ऐसे आपका टेस्टिंग सबसे ज्यादा की है, राइट? टेस्टिंग में बेसिकली आपका सबसे ज्यादा वर्क किस चीज पे होता है? हेलो. Manual testing. हाँ जी. Normal. analysis and writing the test cases. तो Yes, बेसिकली same. आपका जो नीड होता है उसमें एसक्यूएल होता है, राइट? Yeah, SQL is also there. ओके, ठीक है. ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा क्योंकि डेटा एनालिस्ट के अंदर आपका एसक्यूएल सबसे मैंडेटरी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. एक बेसिक रोड मैप देख लेते हैं बेसिकली हमारे डेटा एनालिस्ट के अंदर किस किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस तरीके से चीजें चलती है, किस तरीके से गो थ्रू करेंगे. जो Yeah. ये आप इंटरफेस देख रहे हो बेसिकली सर, ये आपका जुपिटर नोटबुक का है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है. ठीक है.
मुझे बेसिकली कोई बता सकता है डेटा एनालिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? Data. Data राइट, analyst, Collection from data. ठीक है। understanding the use case. Analyzes the data, whatever it is present with us. Requirement. Presentation. एग्जैक्टली, हाँ। डेटा एनालिस्ट Data का जो presentation. Data, whether the data is valid or not as per the requirement. एग्जैक्टली, राइट। देखो, डेटा एनालिस्ट का काम होता है जस्ट द एनालिसिस ऑन द डेटा, राइट। इफ आई टेल यू अबाउट द डेटा एनालिस्ट, देखो बेसिकली वी नीड वन पर्टिकुलर लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, दैट इज पाइथन कोर। इफ आई टेल यू अबाउट द पाइथन कोर हम पढ़ते क्यों हैं? Simply to build the logics. Again, let's suppose we have a data of sales. Okay, मेरे पास near about 2 to 3 lakh rows है, right? Even I know what are the requirements of the client. Still, अगर आपके लॉजिक से बिल्ड नहीं है, क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो? क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे? किस तरीके से चीजें चलने वाली है? अगर आपको बता दिया जाए कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करना है, दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस डेटा, और साथ साथ आपके रिक्वायरमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप कर सकते हो वर्क, अगर आपके लॉजिक से बिल्ड नहीं है। No, first we need to analyze the plan. एग्जैक्टली, Yeah, if इम्प्लीमेंटेशन इज we, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। yes. अब पाइथन कोर आपका बेसिकली यूज होता है टू बिल्ड द लॉजिक्स। इट कंटेन्स मल्टीपल टॉपिक्स लाइक लूप्स, that is for and while, conditional statements, etc. Like it contains data type also, data structures like list, set, tuple, dictionary, function, oops, etc. But these are the most important topics in Python core, which is used to build the logics. ठीक है? अगर आप इन पर अच्छे से कमांड ले लेते हो, दैट मीन्स आपका नियर अबाउट 70 to 75% पाइथन कवर हो जाता है। गॉट इट? पाइथन कोर Yeah. में कोई डाउट? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। द सेकेंड स्टेप इज पाइथन एडवांस। अगेन इट कंटेन्स मल्टीपल लाइब्रेरीज लाइक numpy, matplotlib, seaborn and pandas. If I tell you about the numpy is basically used for mathematical calculations. As we know, data analyst contains just 20 to 30% of maths. Okay, if I tell you about the data science, it is pure stats. Okay, it contains pure stats. आपके डेटा एनालिस्ट के अंदर numpy बेसिकली यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए डेटा के ऊपर। जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो सिंपली आप कवर करोगे अपने numpy से। गॉट इट? Yeah. Second, if I tell you about the pandas is basically used for manipulate the data. As we know, the most important part of data analyst is the cleaning the data, right? हमारे पास रॉ डेटा आता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका क्लीनिंग का पार्ट। तो जो भी आपकी क्लीनिंग का पार्ट होगा, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सारी चीजें जो आप फुलफिल करोगे, वो आप करोगे पांडास के हेल्प से। ठीक है? क्लियर? द यूज ऑफ पांडास, व्हाट इज द Yeah. यूज ऑफ पांडास? ठीक है। अगेन
मेरे पास दो लाइब्रेरीज होती है जिसका नाम मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न है। अब लेट सपोज मेरे पास डेटा है सेल्स का जो कि कंटेन करता है नियर अबाउट 2 to 3 लाख रोज। ठीक है, आई हैव अ सेल्स डेटा विच कंटेन्स नियर अबाउट 2 to 3 लाख रोज। क्या मैं डेटा से क्लाइंट को दिखा सकता हूँ कि मेरी सेल्स कितनी हुई? अगर मेरे पास डेटा 2 to 3 लाख रोज कंटेन करता है, क्या आपका डेटा देखकर क्लाइंट समझ सकता है कितनी सेल्स हुई? नो। एग्जैक्टली, No, no. बिल्कुल। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न बेसिकली हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती है जो कंटेन करते हैं आपके ग्राफ्स लाइक स्कैटर प्लॉट, पेयर प्लॉट, हीट मैप, कोरिलेशन, काउंट प्लॉट एंड एक्सेट्रा, बॉयलन प्लॉट। ठीक है, जो भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे वो आप करोगे अपने मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न से। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है हमारा एडवांस एक्सेल। एज वी नो, पाइथन एंड एक्सेल काफी वास्ट है, राइट? तो हम वो चीज कवर करते हैं जो भी हमारे नीडेबल होती है बेसिकली इन डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पाइवेट टेबल हो जाते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ स्टेप दैट इज एसक्यूएल। अब आपको क्लियर पता है कि एसक्यूएल का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस का काम आना ही चाहिए। लेट सपोज मेरे पास एक 15 GB का डेटा है, इसी के बाद मुझे 17 GB का दे दिया जाए, तो आपकी तो इस तरीके से मेमोरी फुल अप हो जाएगी, राइट? तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये कंटेन करता है आपकी छोटी छोटी आपकी क्वेरीज। लेट सपोज मेरे पास एक कंपनी है एंड मुझे जस्ट ये देखना है कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जो कि वर्क कर रहे हैं और जिनको मैं पे कर रहा हूँ अबव 60,000। तो एसक्यूएल के अंदर आपके पास छोटी छोटी क्वेरीज होती है जिसकी हेल्प से आप डेटा को फेच करते हो। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। No. ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज टैब्ल्यू एंड द सिक्स्थ वन इज पावर बीआई। अगेन these are the tools which is used for visualization। ये आपके दोनों टूल्स होते हैं जो कि अगेन आपके कंटेन करते हैं विजुअलाइजेशन का पार्ट है। सिंपली ग्राफ्स में आप सिंपली शो कर सकते हो। अब मेरे पास मल्टीपल है, लेट सपोज पहले मैं एक्सेल की बात करता हूँ। अगेन एक्सेल के अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो एक्सेल के अंदर भी मैं डेटा के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, राइट? इवन मैं इसके अंदर प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ। तो मैं पांडास की हेल्प से क्यों डेटा के अंदर वर्क करता हूँ, मैं एक्सेल के अंदर क्यों नहीं कर सकता? एनी आइडिया? Because Excel has limitations of around 10,000 rows and एग्जैक्टली, SQL के 2 दिन में इतना टाइम नहीं लेता जितना एक्सेल लेता हाँ जी, बिल्कुल सही। एक्सेल कंटेन कर पाएगा आपकी जस्ट 10 लाख रोज, राइट? और इवन अगर आपके पास उससे ज्यादा बड़ा डेटा हो तो ये सिंपली हैंग हो जाएगा। बट पांडास आपका 10 लाख रोज हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, डजेंट मैटर, आपका इजीली कंटेन करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस कह सकते हो आप पांडास और एक्सेल में। टैब्ल्यू एंड पावर बीआई आपकी विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। अगेन टैब्ल्यू आपका बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पावर बीआई, बट इसका जो स्ट्रांग पार्ट है वो इसका पेड वर्जन है, और जो इसका पेड वर्जन है वो काफी एक्सपेंसिव है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब एडेप्ट कर रही है आपकी पावर बीआई। तो दोनों चीजें डिमांडेबल है, इसलिए दोनों चीजें कवर होती है। अगर आपको क्लाइंट बोल दे कि आपको जो प्रेजेंट करना है वो आपको पाइथन से करना है, तो सिंपली आप यूज करोगे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। बट अगर आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ तो सिंपली आप यूज कर सकते हो टैब्ल्यू और पावर बीआई। ये आपका एक बेसिक रोड मैप है डेटा एनालिस्ट का। गॉट इट? आपको किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर बेसिक रोड मैप में? है। नो। ठीक है, बाकी सबको किसी को? No. सेक्शन सर, अभी लाइक डेटा एनालिटिक्स के एस्पेक्ट में when there is this visualization aspect comes,
तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे Adobe Analytics हो गया एंड Alteryx हो गया. So when the company is like concentrating on that particular tool, कि इसी पे experience चाहिए, then how do we justify if we have only Power BI or Looker Studio experience or Tableau? देखो मैम, बेसिकली आपकी जो ये चीजें होती है टूल्स काफी एक तरफ से रिलेट होती है एक दूसरे से, राइट? क्योंकि सारी चीजें कंटेन करते हैं आपके ग्राफ्स. बट अगर इन चीजों से अपार्ट आपकी कंपनी में नीडेबल है, तो वो आप इजीली रिलेट कर पाओगे. क्योंकि अगर मैं आपका टैब्लो एंड पावर बीआई दोनों चीजें आपको शो करता हूँ, आप देखना आपके अंदर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा. सिंपली आपके ग्राफ्स. हाँ. हाँ जी. तो ऐसे इंटरव्यू में अगर if we are shortlisted हाँ जी. and we have this question कि uh, how do you manage क्योंकि they are using Adobe Analytics and they want 3 years of experience in that itself. So how do we explain to them कि how do we justify कि yes we will be able to come up to that level if given some time, but yeah, if that is an issue then how do we explain? सॉरी मैम, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस कम आ रही है. Oh, sorry. So in case there is a demand from the company कि for example मुझे उनको Adobe Analytics ही चाहिए as an experience of 3 to 4 years. But for example, if I have experience of 3 years in Tableau or Power BI only, then how do I explain that I can come till that level if given some 2 3 months of time? Like how do I ensure that? ओके. Because see, we both know that there is a lot of similarities in all these tools. Because ओके. सब एक ही काम करते हैं, सब एक तरीके से ही almost function करते हैं. So Power BI has DAX tools, Tableau has different tools to visualize the data. हाँ जी. But how do I explain them? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका. बेसिकली मैम देखो, एज वी नो हमारी जो टूल्स होते हैं वो सारे काफी हद तक रिलेट कर पाते हैं. आपने जैसे कि मेंशन किया कि अगर हम बात करें 2 2 3 मंथ्स का टाइम, तो अगर मैं बात करूं किसी और चीज की भी टूल्स की, तो हम इजीली कवर अप कर सकते हैं ये चीजें. क्योंकि हाँ, नो डाउट कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ऑब्वियसली है. टैब्लू के अंदर भी है, पावर बीआई के अंदर भी डिफरेंस है. बट नियर अबाउट 65 to 70% आपकी सिमिलैरिटी होती है, टैब्लू के अंदर भी, पावर बीआई के अंदर भी, इनसे अपार्ट चीजों में भी. तो आप इजीली इन चीजों को कवर कर सकते हो. टूल्स आपका देखो, Okay. अगेन टूल्स में भी आप डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हो. पावर बीआई में भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हो, राइट? बट बेसिकली हम टूल्स सिर्फ यूज करते हैं हमारे विजुअलाइजेशन पार्ट्स के लिए, जो कि आपका सिमिलैरिटी है हर एक इसमें. तो आप इजीली चीजों को गो थ्रू कर सकते हो. Okay. हाँ जी. और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन है जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं? हेलो. I am from non-technical background basically. ओके. Akshita. ठीक है मैम. I'm also. ठीक है. मैम, अगर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँ, आप बता सकते हो? Sure. So, I am basically from the domain of HR. ओके. So, I have around 6 years of experience into HR. And also, I have the same question, like the people earlier asked as well. So, अगर मुझे HR domain से data analytics में जाना हो या data science में, so क्या मतलब आगे का क्या फ्यूचर स्कोप रहेगा? एंड ऑफ कोर्स इट्स बीन 6 years आई एम वर्किंग इन एचआर. सो ऐसा क्या मतलब मैं ऐसा क्या अपने रिज्यूमे में भी शो कर सकती हूँ कि मेरा ये वाला एक्सपीरियंस भी काउंट हो अगर मैं आगे अपनी फील्ड चेंज करूँ? तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं? ठीक है, देखो मैम, आपका जो डोमेन है बिल्कुल ही डिफरेंट है.
राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की, देखो देखो डेटा एनालिस्ट पर आप तभी जा सकते हो जब आपको नियर अबाउट 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो डेटा एनालिस्ट के अंदर, क्योंकि डेटा साइंस की ही टीटरी में आपका डेटा एनालिस्ट आता है। सेकेंड पॉइंट, आप जैसे ही स्विच करोगे दैट मीन्स कि आप एचआर से अगर डेटा एनालिस्ट पे जाओगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन है, ठीक है, आप एज ए फ्रेशर ही जा पाओगे। हम्म। हाँ जी, क्योंकि आपके इसके अंदर आपका टेक्निकल चीजें तो होती नहीं है, राइट। राइट राइट। हाँ जी, तो आपका बिल्कुल डोमेन अलग है, तो आप एज ए फ्रेशर ही जा पाओगे। मतलब एचआर में भी सी आई एम इन द यू नो टैलेंट एक्विजिशन टीम। सो जैसे हम भी हायरिंग्स करते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड की, हाँ ठीक है, जी। कि बीआई एनालिस्ट की भी हायरिंग हो रखी है, करते हैं, एंड सेल्स में भी हायरिंग करते हैं, मतलब बट हाँ ये है कि इन डेप्थ ऑफ कोर्स नॉलेज नहीं होता है इतना, राइट, कि पावर बीआई होता है, कि एक्सेल आता है, बेसिक एक्सेल आता है, मतलब ये सब चीजें होती हैं। बट ऑफ कोर्स इफ आई टॉक अबाउट इफ यू से कि हाँ पाइथन एसक्यूएल टैबलू, तो ये सब चीजें डेप्थ में तो नहीं पता, तो उसके बेसिस पे भी एज अ फ्रेशर भी अगर मैं जाती हूँ तो क्या मतलब आगे का क्या स्कोप है, एंड एंट्री लेवल की कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या पैकेज वगैरह इसका रहता है? देखो मैम, अगर मैं बात करता हूँ डेटा एनालिस्ट की, ये सबसे पहला पार्ट होता है। अब हम्म। अगर मैं बात, चलो मैं पहले इसकी बता देता हूँ मैम, डेटा एनालिस्ट के बाद ही डेटा साइंस क्यों आता है, क्योंकि आप जो डेटा एनालिस्ट का पार्ट करते हो दैट इज क्लीनिंग द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट, सारी चीजें फुलफिल करते हो, वही डेटा आपका डेटा साइंस वालों के पास जाता है, जिस पर वो बेसिकली प्रिडिक्शंस करते हैं अपने एल्गोरिदम से, राइट। ओके। तो सबसे पहला पार्ट आपका डेटा एनालिस्ट है, बिकॉज अगर लेट सपोज मैं डेटा साइंस में जाऊं, इवन मुझे पता ही नहीं कि मैं डेटा में किस तरीके से वर्क कर पाऊंगा, तो उस डेटा पे जब मैं प्रिडिक्शन करने चाहूंगा तो मेरी तो प्रॉपर आएंगी नहीं, आपकी जो परसेंटेज आएगी वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होगी, राइट। तो राइट। डेटा एनालिस्ट सबसे पहला पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं पैकेज की, तो मैं एज ए फ्रेशर एवरेज पैकेज होता है 4 से अबव। ओके। हाँ जी। हाँ, मुझे भी पूछना था। मैं यूएस मॉर्गेज लोन डोमेन से हूँ, फाइनेंशियल। हाँ जी। तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर मैं डाटा एनालिस्ट करती हूँ तो मुझे इसमें क्या स्कोप है? इसे यही मैं रिज्यूमे कन्वर्ट कर सकती हूँ, या मेरा अभी की जो सैलरी है उस पे मुझे हाइक मिलेगी, या एज अ फ्रेशर जाना पड़ेगा मुझे? आप कौन से डिपार्टमेंट में हो मैम? यूएस मॉर्गेज फाइनेंशियल डोमेन। ओके, स्टिल आपका भी चीजें डिफरेंट है, बिल्कुल अपार्ट है, आई मीन। हाँ, मुझे ना हाँ बेसिक जी। लाइक एसक्यूएल का बेसिक हम्म। मुझे पता है। क्रिएट कर मतलब क्रिएट कैसे ये करते हैं, हाँ जी। और टैबलू और पावर बीआई का भी थोड़ा बहुत ग्राफिकल मुझे पता है। ओके, मतलब बेसिकली एक्सेल भी बेसिक, सारी चीजें बेसिक पता है, नॉट थरली। ठीक है, तो ये आप मैम ये सारी चीजें यूज भी करते हो? नहीं, नहीं तो हमारा आप। अलग हाँ जी। सॉ- अलग सॉफ्टवेयर है, उस पे ही काम करते हैं। ओके, तो इसमें से आप कौन कौन सी चीजें यूज करते हो, और जो आपके जो नॉलेज दैट मीन्स आप जिस पे वर्क कर रहे हो वो अपार्ट है? हम्म सिर्फ हम जब मेल करते हैं तो क्लाइंट को एनालाइज करने के लिए सिर्फ हम जैसे कि पावर बीआई से ग्राफिकल जो भी डाटा होता है, कितना वर्क किया है, कितना क्या, वो सारे हम डिटेल्स ग्राफ में सेंड कर देते हैं। तो जैसे कि पीपीटी क्रिएट करके जो जितना भी काम किया है, जो बाकी है, कब मिलने वाला, कब डिलीवरी होने वाला, रिलीज कब होगा, तो वो हम मेल पे भी सेंड करते हैं। तो इसीलिए पावर बीआई का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि ज्यादा हम लोग हमारे ही सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। ठीक है मैम। देखो, बेसिकली रोड आपका जो डेटा एनालिस्ट होता है, हाँ ये हाँ। कंपलसरी नहीं कि आप डेटा एनालिस्ट पे ही जा पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं हम्म बिजनेस एनालिस्ट की भी बात करूं तो बिजनेस एनालिस्ट में भी आप सेम चीजों को गो थ्रू करते हो, बस उसके अंदर आपका जो एक्सेल होता है वो हम्म काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका बिजनेस से रिलेटेड ही डेटा होता है। उसके अंदर आपका रीच कितनी निकल रही है, आप किस तरीके से सेल्स जा रही है पर डे वाइज, आपके चैनल्स कितने चले ना, एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें आप कवर करते हो एक्सेल से। अब डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है हर तरीके का डेटा आता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। यस। बट बिजनेस एनालिस्ट का काम है जस्ट बिजनेस से रिलेटेड डेटा। हम्म रिस्क एनालिस्ट का काम है जस्ट रिस्क
स्टॉक का काम है जस्ट स्टॉक से रिलेटेड डेटा। ऐसे ही जेट आपका आता है, फ्लाइट हो गया, इस तरीके के डेटा। डेटा एनालिस्ट के पास हर तरीके का डेटा आ सकता है। तो जब आप डेटा एनालिस्ट करते हो तो आपकी मल्टीपल ऑफ फील्ड्स खुल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ पावर बीआई की, आप जैसे बता रहे हो आपको पावर बीआई की नॉलेज है, तो आपका पावर बीआई की अलग से हायरिंग भी निकलती है मैम। अब एसक्यूएल की बात करो तो एसक्यूएल आपका डेटाबेस इंजीनियरिंग की भी अलग से हायरिंग निकलती है, आप उसमें भी गो थ्रू कर सकते हो। मल्टीपल फील्ड्स आपकी ओपन हो जाती है। बट इस पे मतलब जो मैं अभी एक्सपीरियंस है, अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसी पे मुझे हाइक मिलेगी या एज अ फ्रेशर जाना पड़ेगा मुझे? मैम इस पे पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि आपको इसी पे हाइक मिलेगी, क्योंकि ओके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट डोमेन हो गया। ओके हाँ जी। ओके, थैंक यू। ये या थैंक यू। अब एनालिस्ट हमारे पास काफी सारे होते हैं, एसोसिएट एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट हो गया, स्टॉक एनालिस्ट हो गया, रिस्क एनालिस्ट हो गया। काफी सारे एनालिस्ट होते हैं, बट डेटा एनालिस्ट के पास हर तरीके का डेटा आता है। ओके और हाँ जी। Let me handle this question, Ravi, because two people have asked similar question. So यहाँ पे what is the challenge here? Like I have told you, most of the time we have this kind of a question that how I can justify my previous experience, right? And that is absolutely important because जो last में हमने जो experience किया है, right? 4 year, 5 year, whatever the work I have done, this should not be go into a vein, right? Or this should not totally go into a waste, right? Because see, in Indian market, it is not easy, and people do not want to take a risk to start as a fresher when you have a 2 or 3 years or 4 years of experience. So here, what we have helped since this we are starting this class first time. Although Ravi sir is old as a trainer, in previous workshop, how we have helped that we help people to prepare their resume, help them to clear the interview, like mock interviews we do and interview preparation. Resume में हम एक काम ये करते हैं because since in our every training classes we do practical project, right? So one project we will pick you from your resume and we will help you to mold the project into a data science so that you can showcase that at least 2 or 3 years of experience you have worked. Honestly speaking, in any interview wherever you go, no, since there is a one HR also in this forum, so she must aware. People do not ask that which kind of a what project you have worked upon. They are asking which company, their your salary structure, your PF or whatever your experience letter, plus what the technology or skill knowledge you have. Right? They are not going to check. Like for example, if I'm working, uh, let's suppose I am working in Accenture, working for Philips project. So and I'm going to give interview in Wipro. So Wipro is not going to ask or do my verification from Philips project, right? They will do all my verification from Accenture. So how I am selling myself during the interview, that is very important, correct? So we will help you in that regarding that mold your resume and update your resume accordingly, right? So you can justify your previous experience plus on top of that your current package, you can switch on that, right? यस ओके। वो एक्चुअली इसीलिए अगर हमें अभी 10 लाख का पैकेज है, अगर हम एज अ फ्रेशर जाते हैं 5 लाख का देते तो ये तो Correct, मतलब correct. हमारा। Absolutely, हाँ absolutely. And we cannot compromise on that. I यस absolutely agree on that. So हाँ, क्योंकि this हम way, yeah, yeah, yeah. हम इसलिए कोर्स कर रहे हैं कि अगर हम अभी 10 लाख का पैकेज अर्न कर रहे हैं तो हमें 15 लाख का मिलना चाहिए, इसीलिए हम ये Absolutely, कोर्स। या absolutely. But yes, if we are doing this kind of a commitment, so we need one commitment from your side as well, which is that be regular in the classes so we can show the confidence on yourself, right? So at least you can show that we can end of the training program, we can say now you can show at least 2 year or 1 year of experience, which is justifiable, right? It is not that we can help you through resume and through mock interview and project and everything, but you do not have the skill, right? So at least you should do the practice. ओके या थैंक यू। No, या thank you. Yeah, Ravi थैंक sir, over to you. Also, one more thing wanted to add into this point. So, what is the if I ask you what is the 5 years down the line future of data analyst? Like, if I start as a fresher, also, after 6 years of working into HR domain. So, Mhm. what kind of
like experience do I get 5 years down the line, or say 10 years down the line? What See, kind of Akshita, position I will be getting? Akshita, I'm not sure if you have joined from since starting. So as I said, I have close to 18 years of experience. When I have started my journey, people were saying there is no replacement for the manual testing. Down the line, after 5 years of experience, I have seen that QTP came at that time. Then QTP has been replaced by other tool Selenium. Now Selenium has been replaced by RPA, right? Although both are different. Now Selenium is replaced by other tools as well in the market, like Cypress is there, other tools are there. So on top of that, the basic thing were there because manual testing cannot go out from the market completely. That is for sure. But yes, we have to upgrade ourselves on a different technologies. And from last 10 years, if you will see the trend of changing of the technology, it is really very fast. In last 2 to 3 years, if you will see, then chat gpt AI has completely changed the way now. Even SQL developer, even the developer from a coding background, they do not need to be expert. Everything is available on the internet, right? You just put it. Even PPT we are preparing, being working as an agile coach, even PPT we prepare for with the help of chat gpt. So for data science, if I say data science, cloud computing, AWS, Azure, or GCP, these are going to be a future in the market. On top of that, few new things will be added, that is for sure, but basic thing will always remain same. The rest, Ravi sir can help that what could be the future after down the line 5 years. So Ravi sir, over to you. हाँ जी, देखो मैम, अगर मैं बात करूं फ्यूचर की डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के अंदर, ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास काफी डिमांड है। डेटा एनालिस्ट पे लेट सपोज आफ्टर 1 ईयर और जितना भी टाइम लगता है, आफ्टर 1 ईयर आप कंपनी में सिंपल हायर हो जाते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर आप सिंपली एक 1 ईयर आप अच्छे से वो कर लेते हो, वर्क कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप इजीली डेटा साइंस में स्विच कर सकते हो। और डेटा साइंस नो डाउट काफी वास्ट है, बट काफी डिमांडेबल है मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो चैट जीपीटी एंड ऑल ये सारी चीजें किस चीज से बनी हुई है? डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल? Yes, I do have. यस, तो वो सारी चीजें आपकी किस चीज से बनी हुई है? वो I- कंटेंट, Part, हाँ जी, yeah, it's actually a part of data science itself. हाँ जी, It's a part of data science. एग्जैक्टली, बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, जो कि बेसिकली कंटेन कर रहा है मशीन लर्निंग एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Right, including prompt engineering and a lot of different things. एग्जैक्टली, डिमांड तो काफी है मैम। अगर मैं बात करता हूँ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस की, इवन आगे और भी ज्यादा ग्रो होने वाला है, क्योंकि यही चीज आपकी मार्केट में सबसे ज्यादा आजकल नीडेबल हो रहा है, राइट? और कोई डाउट? So, No, so thank you. I'm so sorry. Go ahead. हाँ जी, आप में से किस किस ने पाइथन गो थ्रू किया? इज देयर एनीवन हु ऑलरेडी डन पाइथन? Yes, Yeah, sir. I'm I've Sumant Das from. ओके, चलो एक छोटा सा देख लेते हैं अबाउट द पाइथन। व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई डू वी स्टडी द पाइथन? देखो, पाइथन, एज वी नो, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? We can say Python is a interpreted language. Interpreted language in the sense, ये आपका लाइन बाय लाइन कोड रन करता है इन अ सिंपल लैंग्वेज. It will check the first line, then go to the second line, third line, and etc. But if I tell you about the Java, C, C++, they all are compiler language. That means they directly runs. Okay. As we know, Python is a programming language. So the theoretical part is
बहुत जस्ट अ बिट। थियोरेटिकल पार्ट आपका बहुत छोटा सा है, प्रैक्टिकली सारी चीजें आपकी गो थ्रू होने वाली है। पाइथन मेरा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव किस तरीके से होता है वो सारी चीजें मैं आपको आगे गो थ्रू करवाता हूँ। एंड डायनेमिक, डायनेमिक होता है, ठीक है। डू यू हैव एनी नॉलेज व्हेन द पाइथन basically established? If I compare in between Python and Java, which language is the oldest one? Python. Exactly. Python only. Python आपका 25 1991 में आया था। And if I tell you about the Java, Java basically आपका 1995 में आया था, right? पाइथन किसने बनाया था? विडो, वेन, रेसम। पाइथन बेसिकली ग्विडो वेन रेसम ने बनाया था, ठीक है। बस इतना सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है आपका पाइथन का, सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल होती है। जिसने आपने पाइथन पढ़ा है ऑलरेडी, आपने गो थ्रू किया है, तो आप मुझे एक छोटा सा सिंपल बता सकते हो कि क्या मैं खाली अंडरस्कोर से एज ए वेरिएबल बना सकता हूँ? जस्ट अ सिंगल अंडरस्कोर। Just in a part of string, you can actually put it as a ओके, एनीवन? बाकी कोई? Yeah, we can या define declare as underscore. राइट। बेसिकली जो पहला स्टेप होता है आपका पाइथन के अंदर, दैट इज डेटा टाइप्स। इट कंटेन्स मल्टीपल लाइक इंटीजर्स, then if I tell you about string, that is third one is float, and the last one is boolean. What is integer, string, float, boolean? We will go just a minute, ये सब देखेंगे। देखो, पहला स्टेप जो आपके पाइथन के अंदर होता है दैट इज डेटा टाइप। नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा टाइप्स पे ही सारी चीज डिपेंड है आपकी पाइथन की। If I tell you about the integers are just the numbers. We can say the whole numbers, right? In a simple language, जो भी values आपकी decimal point contain नहीं करती है, which does not contain the decimal point, as we can call it as an integers. Okay? जो भी numbers मेरे decimal point contain नहीं करते हैं, वो basically बोले जाते हैं integers. For example, नंबर्स मैटर नहीं करेगा आपकी नेगेटिव वैल्यूज हो या पॉजिटिव। सबको क्लियर है व्हाट इज इंटीजर्स? इज देयर एनी डाउट? Yeah, No. ओके, इफ आई टेल यू अबाउट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेसिकली पाइथन, ओके जस्ट अ मिनट। इफ आई टेल यू अबाउट द स्ट्रिंग, string basically known as the collection of alphabets in Python, right? Just a minute. ठीक है, string is basically collection of alphabets, बट मैं कुछ इस तरीके से कहता हूँ, जो भी चीज मेरी सिंगल कोट मैटर नहीं करता, आपके अल्फाबेट्स हो, वैल्यूज हो, आइदर इट विल बी इन डबल कोट्स
doesn't matter it is in point values or etc. or which is contain triple quotes. जो भी चीज मेरी सिंगल कोट डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर आ जाती है दैट मीन्स आपकी वो डिनोट होती है स्ट्रिंग, राइट। डजेंट मैटर आपकी वैल्यूज कंटेन कर रहा है, अल्फाबेट्स कंटेन कर रहा है, इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट कंटेन कर रहा है। जो भी चीज सिंगल ट्रिपल कोट्स डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर आ जाए दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर? Yeah. Okay. As we know, we have multiple types of codes. Obviously, there is something difference in between them, right? If I tell you about the triple quote basically we can use as a comment also. And if I write like a para, अगर मुझे 2-3 लाइंस लिखनी हो स्ट्रिंग के अंदर तो बेसिकली मैं यूज करता हूँ ट्रिपल कोट्स। फॉर एग्जांपल, don't look at this X. I will tell you about this afterwards. If I write in single quote multiple lines, it will show us an error. Okay. Just like single quote, if we mention double quote also, again it will show us an error because multiple of lines we can store in just triple quotes. Got it? If I store multiple of lines in triple quote, you can easily fetch the data, right? Yeah. If I tell you about the single quote and double quote, there is a minor difference in between them. Let's suppose, as we know, the apostrophe cases like don't. If I write don't here in just a single quote, it will show us an error which is called as invalid syntax, right? Because he just gets confused कि मेरी जो ट्रिप सिंगल कोट मेंशन है वो यहां से यहां तक एंड हो रहे हैं या फिर मेरे यहां तक है। तो apostrophe वाले इन ट्रिपल कोट No. ठीक है। And if I tell you about a single quote, we can write in a single line whatever we want to write. We can just get the output. If I tell you about the float, float is just opposite to integer. As I told you, integers which does not contain decimal point, just opposite to integers, we can say it is a float. The values which contains the decimal point is known as float. Doesn't matter you are taking the in a negative value or positive. Got it? Boolean just shows us the output in either it will be true or false. As I told you before that the Python is a case sensitive. That means you have to write T and F in a capital. If you write it in a small, then it will not be denoted as a Boolean. Got it? It will show you just an error. Let me show you. If I write here just a false, and if I check the data type, I will tell you what is the use of type. It will show us an error, and error के अंदर simply आपका mention होगा name false is not defined. Name false is not defined. ये confused हो गया कि ये false है क्या। अगर मैं यही चीज capital में mention करता हूँ, the color will get changed and you will get the data type as bool. Bool stands for boolean. Got it? Is there any doubt in data types? No. क्या आप सबको क्लियर है? देखो, पाइथन बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये कंटेन करता है टूटी फूटी इंग्लिश। दैट्स इट। बहुत इजीली आप समझ पाओगे चीजों को किस तरीके से चल रही है। राइट? किसी को कोई डाउट डेटा टाइप्स में? आरती मैम, आदिति मैम? No, no doubt. ओके। अंबा सर, अंबा मैम, सॉरी। No doubt. ओके। अनुभव सर, आशीष सर? No, no, I am good. ओके।
रवि सर, माधुर सर, मनीष सर, सुमंता मैम। नो डाउट सर। ठीक है। एक और चीज देखो, जब भी गो थ्रू करेंगे, जो भी डाउट्स आपके होते हैं, डाउट्स लेके कभी मत चलना। आगे चलकर वो ऐसा, मतलब इतने मल्टीपल ऑफ डाउट्स हो जाएंगे कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जो भी डाउट्स होते हैं एट दैट टाइम ओनली आपको सारी चीजें कवर करनी है। डाउट लेके नेक्स्ट डे नहीं चलना, डाउट उसी टाइम पे क्लियर करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, यही आपका बेसिक चीजें चलने वाली है आपके पाइथन के अंदर। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं डेटा एनालिस्ट की, तो ये कंटेन करता है हार्डली 40 to 50% कोड। 40 to 50% कोड इन द सेंस छोटे छोटे कोड से कंटेन करता है। आपको कोई लेंदी कोड का बनाने का कोई वो नहीं है, नीड नहीं होती है डेटा एनालिस्ट के अंदर। ठीक है, आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो। और बाकी किसी को कोई डाउट? आपका ये बेसिक रोड मैप होगा, इस तरीके से चीजें आप गो थ्रू करने वाले हो। जो पहला स्टेप है, आप पाइथन कोर ही पढ़ोगे। सिंपली हमें पहले लॉजिक्स को बिल्ड करना है, उसके बाद ही हम परफॉर्म कर पाएंगे कुछ। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? नो सर। सर ये ड्यूरेशन क्या रहेगा कोर्स का? सर नियर अबाउट इट विल टेक 3 months। ये डेली रहेगा या वीकेंड बैचेस रहेगा? सर ये आपको सर कंफर्म कर देंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो फिर आज यहाँ पर ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। Okay. Anyone is having any technical query, please ask. आरती, आदिति, अंबा, अनुभव, आशीष, रवि, मधुर, Lakshmi, Sumanta, and Tushar. Any query Ravi sir, related to हाँ जी। technical I or have course one content? question. Like, Okay. Yeah. I have experience in embedded domain only and not test engineer domain. Like, if I am switched to data analysis domain, so how much future is there in data analyst in market? How much job are there in jobs are in based on the service based company or product based company? That is my question. Like, सर अगर मैं जॉब की बात करता हूँ डेटा एनालिस्ट के अंदर, तो आपके सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, दोनों के अंदर है। ठीक है, और ये काफी डिमांडेबल है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। एक मेरे फ्रेंड है जो कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। अभी yeah. उन्हें हाल ही में सिर्फ 3 years हुए हैं। उन्होंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया था। डेटा एनालिस्ट का कोर्स करने, वो भी प्योर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, नो डाउट। आज वो अमेजोन में है। हाँ, नो डाउट उनका अभी पैकेज ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एज ए फ्रेशर गए थे डायरेक्टली अमेजोन में। बट अब आज 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो डायरेक्ट डेटा साइंस में स्विच है, और वो आउट ऑफ द कंट्री है। डेटा एनालिस्ट के अंदर काफी डिमांडेबल है सर। Like, we can show us our previous experience because we are working in IT sector, but we can show as a if we will be switch in data analyst domain, we can show us our previous experience over there. या बिल्कुल सर, आप दिखा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलता। अगर आपका सेम फील्ड है, दैट मीन्स कि सम काइंड ऑफ टेक्निकली फील्ड होती है आपकी, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। दैट मीन्स आप इजीली बता सकते हो उन्हें। अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हो तो आपको उससे आगे हाइक मिलता है। Yeah. ठीक है सर। और सिंपल सी बात है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है जस्ट एनालिसिस करना। अब डेटा हमारा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है।
तो डेटा एनालिस्ट का स्कोप तो खत्म होने से रहा, पहली बात। हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? Mathematical concept, how much we should use in this data analytics? Data analyst contains near about 20 to 30% of maths. That's it. Data scientist content data. If you go through data science, it contains your pure stats. It contains a maths. Okay. Data science के अंदर pure maths चलता है, आपका stats. But data analyst के अंदर simply 20 to 30% contain करता है आपका maths. That's it. Got it? Yeah, but Okay. So thank you so much. Is there any doubt? Guys, please ask if you have any query regarding No. technical course content or everything. No queries? Shall we proceed? So please Yes. start. Okay, so let's come to the fees part. My screen is visible. Yes, Snail. So the course fee is 24,000. We are giving early bird discount, that is rupees 2,000 for first year transfer. When you transfer the fees initially, they will get 2,000 rupees discount. If you are paying one time, then you will get 3,000 rupees discount. Okay. We are providing a recorded session. That means after every session you will get recordings, and that will be for lifetime access. Study material we will provide. It's a weekend classes. Okay. Ravi sir, can you please confirm the timings? हाँ जी मैम, मैं आपको आज ही करता हूँ. I will tell you. Okay. Guys, what timing are comfortable for you? It is in the morning or evening? Is it Generally, we will go with the majority. That's online why. or offline? So only online. Oh. Hello. Or is it possible to you in the weekdays, in the morning or in the late night? Early morning or late night? No, it's not possible for me. Okay. Yeah, for weekdays also not possible for me. Okay, so we will get to the weekends, not an issue. Timings we will decide later on, not an issue. Maybe 10 or 12. Yes, Snail, sure. 10 a.m. is, I think, all right for all. Okay. Here is a UPI pay number, phone pay number. You can transfer the fees and please share screenshot with me once you pay the fees. So I will give in a batch. Okay. Yeah, sure. You can Snail. pay in installments also, but in 1 month you will have to pay. You can What pay is into the installments. duration of this course? Sorry. What is the duration of this course? Duration will be approximate 3 months. It will take 3 to Okay. 3.5 months. Any doubt regarding the fees? Hello. Hello. no, ma'am. Nitesha, are you there? Am I audible, guys? You're audible. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, Snail. Any doubt? Any doubt regarding fees or course content or anything else? You can ask here. No. Okay. So can we close the session if you don't have any queries?
Yes, I am good. Okay. 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 Thank you so much, Ravi, Anubhav, Ashish, Ravi, Sumanta, and Lakshmi. Thank you so much, guys, for joining. कल खानी है किस कंटेंट में बात करोगे एग्जाम में बात तो नहीं निकाली ना मेरे बारे में